Hey guys, welcome to Dramatic Science. It's me Ayon. Today is the first lecture of the topic reflection. So let us see what we will discuss today. So as you can see, we have on an average 6 topics for today's discussion. Number 1, definition and laws of reflection. Number 2, types of reflection. Number 3, concept of normal incidence of light rays. Types of mirror, types of images formed on mirror, characteristics of image formed in a plane mirror. Okay, so let's start with our first topic, that is definition and laws of reflection. So as you can see, the definition and laws are written. What is the definition of reflection? Light ray bounces back when it gets incident on a smooth polished surface. This phenomenon of light rays is called reflection. This is simpler definition, and laws are the incident ray, reflected ray and the normal lie in the same plane. First law. Second law is angle of incidence equal to angle of reflection. So if we consider a polished surface, suppose this one, and a light ray like this has incident on it, then this light ray will bounce back when it gets incident on a smooth polished surface. This is a polished surface. This light ray comes to this surface and it will bounce back to that medium. This phenomena is called reflection. We used to draw a normal over here. So this ray is P, Q, R, N, X, X dash. So here we can say X, X dash is reflector because it is reflecting the incident light. PQ क्या होगा? PQ will be incident ray जो incident हुआ. QR will be reflected ray. QN, that is perpendicular. QN is called normal. Right? So according to this law, first law, incident ray, that is PQ, reflected ray, that is QR, and the normal, that is QN, is lying on the same plane. Okay, and second, angle of incidence, that means this angle, say I, angle of reflection, this angle will be same. So this law states I equals to R. Angle of incidence with respect to normal, angle of reflection with respect to normal will be same. Okay, so next we will learn different types of reflection. So here are basically two types of classification related to reflection. Number 1 is regular and number 2 is irregular or diffuse reflection. Regular reflection means reflection on simply plane surfaces, occurs on plane surface like this one. This one is a plane surface, and one interesting fact is that at the case of regular reflection, see these two rays are parallel, incidenting on this plane surface, and after reflection the reflected ray also remains parallel. So at the case of regular reflection, incident ray and reflected ray always remains parallel. Right? Example, plane mirror or static water. But at the case of regular or diffused reflection, as it is occurred on rough surfaces, so this parallel incident ray eventually does not remain parallel when they get reflected. See, these two rays are not parallel, but these incident rays are parallel. So this is the funda. At the case of irregular reflection, incident rays are parallel, but it is not necessary that the reflected ray will be parallel. Okay, examples: cinema screen, walls, white paper, etc. This irregular reflection has certain advantage. Like if you know see a film in a cinema screen, and a cinema screen is absolutely rough surface,
So there is lots of irregular reflections, right? And due to that irregular reflections, a visitor or someone who is viewing the film can see the image at any position throughout the hall. मतलब हॉल में वो जिस तरफ भी होगा उस तरफ तो ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन का लाइट जाएगा, क्योंकि ये तो अनपैरेलल है, राइट? तो हर तरफ से वो जो फिल्म का इमेज है वो दिखाई देगा. गॉट इट? सो दिस आर द मेन टाइप्स. नेक्स्ट वी विल हैव आवर कंसेप्ट अबाउट नॉर्मल इंसिडेंट्स. So now we have an image of normal incidence x dash. This one is a plane surface, and PQ, this PQ is a incident ray incidenting on this surface at 90 degree, right? See, the angle is 90. So at the case of normal incidence, that means the ray is incidenting through normal, it will rebound at that same direction. जैसे P से Q तक आया, Q से P तक वो चला जाएगा. That means PQ is the incident ray, PQ क्योंकि ये आया, and QP opposite direction में will be reflected ray. इधर angle of incidence that is I का नाम क्या है? Angle of incidence, इसका वैल्यू क्या होता है? 0 डिग्री. So definitely R, that is angle of reflection, वो भी 0 डिग्री होगा क्योंकि I and R तो सेम है. So this one is normal incidence. Very simple. Okay. Next we will learn about the types of mirrors. So these are the classifications. Basically mirrors are divided into two categories: plane mirror that we use in our daily life, and second one is spherical mirror. Spherical mirror are created from a sphere, that's why it's called spherical mirror. Further, this is divided into two parts: concave mirror, this is the diagram, and convex mirror, this is the diagram. Suppose if you take a spoon, simply a spoon, then this surface is concave and this surface, outward surface, is convex. Concave, cave means we are entering in some region, cave, so it's like a cave, we are entering here. So this one is concave and this one is convex. Later we will see how these images, basically these two images can, these two mirrors can form images, right? For now we will go on the topic that is types of images. So here are the types of images. Number one is real image, number two is virtual image. Real image are those kind of image which we can obtain on a screen, like written, can be obtained on screen. Real image basically are inverted, like this one is the object and the image will be formed like this, right? Inverted. Acha, real image can be formed by using a concave mirror and concave lens. Concave mirror, convex lens. We will learn lens later. At the case of virtual, it cannot be obtained on a screen and it is erect. That means if the object is in this position, then the formed image will be like this. Okay, this is erect. As the object is in this and the image will be also be in upright position, upright. Plane mirror, that is our household mirror. Concave mirror, convex mirror, concave lens, that means 4 instruments: plane mirror, concave mirror, convex lens, and convex mirror and concave lens. This 4 instrument can form virtual image. Okay, तो ये नोट डाउन कर लो. Next we will have our last topic, that is characteristics of images formed on a plane mirror. So here we have drawn two
two ray diagrams of a plane mirror. This one is for point source and this complicated thing is for extended source. Okay, kindly आप लोग एक काम करो, वीडियो को पॉज करो, इस टॉपिक का स्क्रीनशॉट लो और ये दोनों इमेज किस तरह से फॉर्म हुआ है एकदम ठंडे दिमाग से कॉपी में ड्राइंग कर लो. राइट, सो इधर क्या हुआ, दिस P इज अ पॉइंट सोर्स, सो इट विल एमिट लाइट. जो लाइट ये सीधा आएगा दैट इज नॉर्मली आएगा, ये तो नॉर्मल इंसिडेंस है तो सीधा आके सीधा चला जाएगा. सो दैट्स वाई हम लोगों ने इसको एक्सटेंड किया करके इस पॉइंट पे आए. फिर ये नॉर्मल इंसिडेंस है, नॉर्मल मतलब सिंपल काइंड ऑफ रेगुलर इंसिडेंस है. तो इधर से ये जो रिफ्लेक्टेड रे गया उसको हमने एक्सटेंड किया, एक्सटेंड करके ये जो कटिंग पॉइंट आया दिस इज द इमेज. बेसिकली पॉइंट सोर्स है तो ये भी होगा पॉइंट इमेज. राइट, अगर एक्सटेंडेड सोर्स लेंगे सपोज दिस वन PQ अ पेन, इस पेन का इमेज कैसे फॉर्म होगा, दिस वन. तो रे डायग्राम समझते हैं. पहले P से जो लाइट स्ट्रेट जाएगा वो स्ट्रेट आएगा, तो इसको हमने इधर जाके इधर लाया, फिर इसको एक्सटेंड किया इस पॉइंट पे. फिर ये Q से जो लाइन देखो सीधा जाएगा, सीधा आएगा नॉर्मल इंसिडेंस, उसको हमने एक्सटेंड किया दिस पॉइंट. सो दिस इज द P पॉइंट, दिस इज द Q पॉइंट. सो दिस वन विल बी टर्म्ड एज P डैश एंड Q डैश, क्योंकि ये PQ का ये इमेज है. फिर P से दो रे आया, दिस वन, दिस रे एंड दिस रे, ये दोनों रे आके सिंपली रिफ्लेक्टेड होगा. ये जो दोनों रे है जो रिफ्लेक्टेड आ रहा है उसको हमने एक्सटेंड किया, एक्सटेंड करके वो P डैश पे टच करेगा. फिर Q से ऐसा ही दो रे आएगा, फिर उसको हमने जो रिफ्लेक्टेड हुआ एक्सटेंड किया, वो Q पॉइंट पे टच करेगा. एक ट्विस्ट देखो, P का जो ये फास्ट रे है दिस एंड Q का जो ये फास्ट रे है दिस, ये दोनों मीट करेगा. फिर ये जो P का सेकेंड रे दिस और ये Q का सेकेंड रे दिस, ये दोनों मीट करेगा. तो ये इधर हमारा I होगा एंड वी विल सी दिस इमेज P डैश Q डैश. I की मदद से ऐसे स्ट्रेट हम लोग ये P डैश Q डैश इमेज को देखेंगे. ओके, सो इधर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आता है इमेजेस का, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस. मतलब ये जो डिस्टेंस है PO एंड P डैश O विल बी सेम. इधर ये इस पॉइंट को हम बोल सकते हैं सपोज O, PO P डैश O विल बी सेम. नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट हाइट इक्वल टू इमेज हाइट. इधर ऑब्जेक्ट का जो हाइट है दिस हाइट और इमेज का जो हाइट है दिस हाइट विल रिमेन सेम एज यू सी योर सेल्फ ऑन अ प्लेन मिरर. प्लेन मिरर में आप लोग खुद को क्या देखते हो, आपका जो हाइट है और आपका जो इमेज है प्लेन मिरर में वो दोनों सेम है. दैट्स वाई ऑब्जेक्ट हाइट इक्वल टू इमेज हाइट. थर्ड इज वर्चुअल इमेज. दिस वन इज वर्चुअल इमेज, दिस वन इज वर्चुअल इमेज बिकॉज वी कैन नॉट ऑब्टेन दिस ऑन अ स्क्रीन. Very simple. Next, upright or erect. Definitely, image is upright, and object is in this position and image is in this position. अगर ये उल्टा हो जाता तो उसको हम बोलते inverted, लेकिन ये upright है. Okay, so this one is for plane mirror. So guys, that's all in this lecture. In lecture number 2, I will preferably discuss about concave and convex mirror. देयर इमेज फॉर्मेशन, उन दो मिरर का क्या क्या पार्ट्स है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है. राइट, सो लेक्चर 1 एंड्स हेयर. उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा. इफ इट हेल्प्स गिव्स अ थम्स अप, डू सब्सक्राइब, यू कैन कमेंट एंड एनी काइंड ऑफ डाउट्स यू कैन मैसेज मी पर्सनली. आई विल गिव द डिटेल्स ऑफ माई इंस्टाग्राम एंड मेल ऑन द डिस्क्रिप्शन. सो बस सेफ रहिए, इस टाइम पे घर में रहिए. मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, टाटा, बाय बाय.